गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हिमालयन टाउन्स नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो हिमालयन रीजन है वो 13 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में फैला हुआ है और लगभग 50 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इन्हीं रीजंस की वजह से हिमालयन टाउन्स को जो है वो एक डिफरेंट डेफिनेशन चाहिए अर्बनाइजेशन की। तो चैलेंजेस क्या हैं? कुछ की स्टेट कैपिटल्स जो हैं वहाँ पर सिग्निफिकेंट जो है चैलेंजेस हैं सिविक मैनेजमेंट से रिलेटेड। और सिटीज़ जैसे कि श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलोंग, शिमला, यहाँ पर इश्यूज रिलेटेड टू सैनिटेशन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई देखने को मिलते हैं। रूट कॉज इन प्रॉब्लम इन इश्यूज़ की है कि जो प्लानिंग मॉडल्स यहाँ पर बनाए गए हैं जो प्लेन एरियाज़ के होते हैं उसी को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो सिटी गवर्नमेंट्स के पास स्टाफ भी उतना नहीं होता है, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड अर्बन एक्सपेंशन हो रही है, खासकर पेरिफेरल एरियाज़ में, जो कि एक ग्रोइंग कंसर्न है। तो मतलब अब जो विलेज होते हैं आसपास के, उनमें भी एक्सपेंशन की जा रही है सिटी को एक्सपैंड करने के लिए। और 90% जो लिक्विड वेस्ट होता है जनरेटेड इन एरियाज़ में, वो वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट किए। तो अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या हैं? हिमालयन रीजन जो है वो इमेंस प्रेशर में है रैपिड अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट से, हाई इंटेंसिटी टूरिज्म की वजह से, अनसस्टेनेबल इंफ्रा जो है प्रैक्टिसेस की वजह से, फिर इररिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूज़ की वजह से। क्लाइमेट चेंज भी जो है वो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को चेंज कर रहा है। राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से वाटर स्कार्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सब हो रहा है, ठीक है। और ये प्रेशर्स जो हैं वो सोशो इकोलॉजिक फैब्रिक जो होता है हिमालय का उसको डिसरप्ट कर रहे हैं। और इस ग्रोथ से देखा गया है कि जो इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको अनसेफ कंस्ट्रक्शन से रिप्लेस किया जा रहा है अर्बनाइजेशन में। तो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी हो रहे हैं। तो इसीलिए एक शिफ्ट टूवर्ड्स इको टूरिज्म की ज़रूरत है। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं इसके लिए? अब कहा जा रहा है कि जो प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इन एरियाज़ में, उनको ट्रेडिशनल लैंड यूज़ प्रिंसिपल्स की बजाय जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस को फॉलो करना चाहिए। कंसल्टेंट ड्रिवन अर्बन प्लानिंग करने की बजाय अर्बन डिज़ाइंस जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस पर फोकस रखते हैं उसको करना चाहिए। कोई भी सिटी अभी तक जो है उसके पास ऐसी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को सपोर्ट कर सके। तो करंटली जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र्स भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज़ में, वो भी बहुत कम है, 0.5% ऑफ जीडीपी। उसको बढ़ाकर 1% तक एटलीस्ट करना चाहिए, ठीक है। हिमालयन टाउन्स को ब्रॉडर डिस्कशंस करनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिमूवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर सर्टेन ड्रग्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने जो रिक्वायरमेंट होती है क्लिनिकल ट्रायल्स की कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के लिए इंडिया में, वो रिमूव कर दी है अगर वो ड्रग्स अप्रूव्ड हैं यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ईयू में। तो क्लिनिकल ट्रायल्स अगर हम देखें तो ये क्रूशियल होते हैं इवेल्युएट करने के लिए सेफ्टी या एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग्स को। तो ये फेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर जो है क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो ड्रग कंपनीज करती होती हैं, ठीक है। उससे उनको वैल्यूएबल डेटा मिलता है, ठीक है। तो इंडिया में जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं ये CDSCO जो है वो रेगुलेट करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर और न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कई इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं जैसे CDSCO, ICMR, DCGI, CTRI, ठीक है। तो होता क्या है कि हर इंस्टीट्यूशन को जो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहा है उनके पास अपनी एक एथिक्स कमेटी होनी चाहिए ताकि वो ट्रायल प्रोटोकॉल्स को रिव्यू कर सकें। और बोर्ड होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, जो कि विद इन इंस्टीट्यूशंस होंगे और वो रिव्यू और मॉनिटर करेंगे एथिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दीज क्लिनिकल ट्रायल्स। जो ट्रायल्स अगर आउटसाइड इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो रहे हैं उसके लिए इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी बनाई जाती है ताकि एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा सकें। फिर ICMR भी जो है वो चाहता है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए उन पॉपुलेशन की जिनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। और जो 2019 के रूल्स हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, उनमें कहा गया है कि अगर कोई ट्रायल करते समय इंजरी या डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो है वो कंपनसेशन भी मैंडेटरी होगी, ठीक है। तो इंडिया ने रूल्स जो हटाए हैं वेवर किया है क्लिनिकल ट्रायल्स का, वो 5 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के लिए किया है। ऑर्फन ड्रग्स जो कि रेयर डिसीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जीन या सेलुलर थेरेपी प्रोडक्ट्स, जो ड्रग्स यूज़ किए जाएंगे पैंडमिक्स में, स्पेशल डिफेंस पर्पसेस में या फिर सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक एडवांसेस में जिनका यूज़ है, इन 5 ड्रग्स के लिए जो है वो अब क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो बाहर अप्रूव्ड हैं इन 5-6 जो यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये मूव से जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस मेडिसिन जो है वो इंडिया बहुत तेज़ी से अवेलेबल हो जाएगी।
तो DCGI जो है उनके पास एक्चुअल अथॉरिटी होती है वेवर ग्रांट करने की, और ये जो डिसीजन लिया गया है ये ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंडिया को अलाइन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है ये फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड। लेकिन कंसर्न्स ये हैं जब पहले भी इंडिया ने जब वेवर्स दिए लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स के, तो 2012 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं जो कि लोकल ट्रायल्स की ज़रूरत है जिनको, क्योंकि इंडिया के कंडीशंस और जेनेटिक फैक्टर्स डिफरेंट हैं थोड़े, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपीडिशियस क्लियरेंस ऑफ चेक्स के लिए आरबीआई ने रिसेंटली एक मेजर अनाउंस किया है कॉन्टिन्यूस क्लियरेंस ऑफ चेक्स के लिए, जिसको हम चेक अंडर जो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप फ्लो ऑफ फिजिकल चेक को रोक देते हो, और उसकी बजाय डिजिटल आप जो है सर्विसेज का यूज़ करते हो, जैसे कि ऑनलाइन बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम का यूज़ करते हो, और जो MICR डेटा होता है चेक का, उसको कैप्चर करके जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करते हो। तो एक्चुअल में जो आपकी चेक की मूवमेंट होती है उसको नहीं करनी पड़ती है फिजिकल। तो CTS एक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव PKI बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, और CTS 2010 स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं, जो कि कुछ बेंचमार्क्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए चेक्स के ऊपर, जो भी जितने भी बैंक्स हमारे इशू करते हैं कंट्री में। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ मैंडेटरी मिनिमम सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं चेक्स के ऊपर, जैसे कि क्वालिटी ऑफ पेपर ऐसा होना चाहिए, वाटरमार्क, बैंक का लोगो होना चाहिए, ताकि जो है स्क्रूटनाइज करते हुए इमेज बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज कर सके उस पर्टिकुलर बैंक के स्टैंडर्डाइज चेक को, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? अब एक ही दिन के अंदर चेक क्लियर हो जाएगा, डेटा स्टोरेज जो है वो और रिट्रीवल बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो मैनुअल आपको देखना पड़ता है सारा। मिनिमाइज़ हो जाएंगे रिस्क, सिक्योर चेक क्लियरिंग सिस्टम मिलेगा, और कॉस्ट सेविंग होगी क्योंकि फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स नहीं करनी पड़ रही है। बॉटलनेक्स जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी, डिले कम होंगे, और शॉर्टर क्लियरिंग साइकिल्स हो जाएंगी। एक सेंट्रलाइज इमेज आर्काइवल सिस्टम भी डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कस्तूरी कॉटन भारत। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने एम्पावर किया है कॉटन जीनर्स को अक्रॉस द कंट्री कि वो कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड जो है वो प्रोड्यूस कर सकें QR कोड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। तो कस्तूरी कॉटन भारत है क्या? एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का, जो कि एक पायनियरिंग एफर्ट है ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन के लिए। तो इसमें कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी करने के लिए कस्तूरी भारत कॉटन भारत ब्रांड की जो है QR बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है हर स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग पे, ताकि आप कहीं पर भी किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग पर देख सको कि क्या ये कस्तूरी जो कॉटन भारत जो का जो ये जो बेल है ये कहाँ से जनरेट होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एक माइक्रो साइट भी जो है वो डेवलप की गई है, QR बेस्ड वेरिफिकेशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम जो है वो नेशनल लेवल पर ऑपरेशनल है, और जो जिनर्स होते हैं वो उनको एम्पावर किया गया है कि वो जो है वो प्रोड्यूस करें कॉटन कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड एज पर स्टिपुलेटेड प्रोटोकॉल्स। और जीनिंग क्या होता है? जीनिंग जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पिनिंग प्रोसेस का। इसमें क्या होता है कि जो कॉटन के सीड्स हैं उनको लाया जाता है जिन्स में, और उनको सेपरेट किया जाता है, सीड्स को, डस्ट को या कोई भी फॉरेन पार्टिकल को रिमूव किया जाता है, ताकि कॉटन जो है वो कॉटन स्पिनिंग मिल्स में अच्छी तरह की कॉटन जो है वो पहुंच सके। पहले इसको हाथ से किया जाता था, बट अब इसके लिए मशीन्स आ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मंकी पॉक्स। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है मंकी पॉक्स के आउटब्रेक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कॉन्गो में कुछ केसेस आए हैं। तो मंकी पॉक्स क्या है? एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से होती है। वायरस ये जो है वो सेम फैमिली का है जो कि स्मॉल पॉक्स भी करता है, और फर्स्ट ह्यूमन केस जो मंकी पॉक्स का है वो 1970 में रिकॉर्ड किया गया था DR कॉन्गो में, और जिसका नाम तो मंकी पॉक्स है ओरिजिनली, बट सोर्स ऑफ दिस डिसीज़ जो है वो अननोन है अभी तक।
मॉर्टेलिटी रेट जो है मंकी पॉक्स का वो लगभग 0 से 11% तक के बीच में रहता है। और इसके अंदर कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो स्किन रैश हो जाता है जैसे आपके चिकन पॉक्स में भी देखने को मिलता है, फिर फीवर, हेडेक, मसल एक, बैक पेन, लो एनर्जी, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, ये सब हो जाता है। ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू होता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, बट कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उससे कंसिडरेबल प्रोटेक्शन मिल जाती है मंकी पॉक्स की डिजीज़ में भी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नंदिनी सहकार योजना। ये टॉपिक इकोनॉमी सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने राज्यसभा में इन्फॉर्म किया है नंदिनी सहकार स्कीम के बारे में। तो ये नंदिनी सहकार योजना विमेन कोऑपरेटिव्स को असिस्ट करने के लिए बनाई गई एक स्कीम है, जो कि ताकि उनका बिजनेस मॉडल जो है वो जो है वो सपोर्ट किया जा सके एनसीडीसी द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। तो वेमेन फोकस्ड फ्रेमवर्क जो है ये स्कीम के अंदर दिया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, हैंड होल्डिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट, हर स्टेज में सपोर्ट किया जाता है। कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है फाइनेंशियल असिस्टेंस की विमेन कोऑपरेटिव्स के लिए। और इसके अंदर जो है वो एनसीडीसी इवन 2% इंटरेस्ट सबवेंशन भी देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन लॉन्ग टर्म लोन लेती हैं ये कोऑपरेटिव्स। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 महीने के अंदर, जब वो शुरू हुई है उसके 3 महीने के अंदर एलिजिबल हो जाती है लोन लेने के लिए। विमेन कोऑपरेटिव्स जो हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं एज विमेन कोऑपरेटिव्स, और वहाँ पर कम से कम 50% विमेन भी जो हैं वो प्राइमरी मेंबर्स हैं, तो वो भी एलिजिबल होती हैं इसके लिए। और सिग्निफिकेंस क्या है स्कीम की? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए ये स्कीम हेल्पफुल रहेगी। एंटरप्रेन्योरियल जो डायनामिज्म है वुमेन का, वुमेन कोऑपरेटिव्स के थ्रू, वो जो है वो एनहेंस किया जा सकेगा, सपोर्ट किया जा सकेगा। ठीक है। वुमेन के एंटरप्राइजेज, बिजनेस प्लान फॉर्मुलेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, क्रेडिट, सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन, सारे ही जो है क्रिटिकल इनपुट्स जो होते हैं एक स्कीम के अंदर, उन सबको कन्वर्ज करके इसी एक स्कीम के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Himalayan towns need a different kind of development. This topic is important for your environment section. So Indian Himalayan region, which is spread across 13 Indian states and union territories, is seeing unprecedented economic growth, but that is more unplanned. And nearly 50 million people reside in this region. So we are seeing more urban settlements developing here. And we are also witnessing the catastrophic disasters that are happening in this region. So Himalayan towns therefore require a different kind of urbanization than we see than we see conventionally. Okay, so what are the challenges in these towns? So Himalayan towns, including the key state capitals, they face significant civic management challenges. For instance, cities like Srinagar, Guwahati, Shillong, Shimla, even the smaller towns, they are grappling with issues related to sanitation, solid and liquid waste management, and water supply. The root cause of these problems lie in the planning models, which are actually designed for plains, but they are blindly replicated in these Himalayan regions also. Even the city governments here are severely understaffed, and they do not have adequate staff to support the civic infrastructure or civic management in these cities. Okay, so there has also been uncontrolled urban expansion in peripheral areas apart from these key state capitals like Srinagar and Guwahati. We're witnessing that the peripheral expansion is encroaching on village commons, which is leading to depletion of open spaces, forest lands, and even watersheds. Moreover, 90% of liquid waste which is generated in these areas is discharged into water bodies without any treatment. Okay. So the Indian Himalayan region is under immense pressure from rapid urbanization and development, compounded by high intensity tourism,
unsustainable infrastructure practices, and irresponsible resource use, particularly land and water. These issues are further aggravated by climate change impacts like changing precipitation patterns and rising temperatures, which is leading to water scarcity, deforestation, land degradation, biodiversity loss, even increased pollution, including plastic waste. So these pressures threaten to disrupt the socio-ecologic fabric of Himalayas, and this growth has often resulted in the replacement of eco uh, this growth has often resulted in the replacement of eco-friendly infrastructure with inappropriate and unsafe constructions, which has also led to depletion of natural resources. So for the long-term sustainability or long-term development of this area, we need a shift towards ecotourism, which is urgently needed. Okay. So, what are the recommendations? So, planning institutions in these cities must shift from traditional land use principles to more comprehensive approaches, which incorporate geological and hydrological vulnerabilities as well. So, instead of consultant driven urban planning, we need to go for urban designs which are focused more on climate resilience. None of the cities in these areas have financial capacity to support their infrastructure need. Therefore, the current intergovernment transfers from the central government to urban local bodies, which account for only 0.5% of the GDP, should be at least increased to 1%. Himalayan towns must also engage in broader discussions about sustainability, okay, which should also involve public participation. So the next topic is removal of clinical trials for certain drugs. This topic is important for your governance section. So government has recently waived the requirement for clinical trials of certain category of drugs in India if they are already approved in the US, UK, Japan, Australia, Canada, and the EU. So if we look at the clinical trials in India, then they're crucial for evaluating the safety and efficacy of new drugs, and these trials, we all know, they are conducted in phases. And India, because of its diverse population and vast pool of medical conditions, it is an attractive destination for clinical trials for the drug companies, as it provides them with valuable data that can be generalized across various populations. So in India, we have the regulation of clinical trials under the CDSCO and under the Drugs and Cosmetics Act and the new Drugs and Clinical Trials Rules of 2019. So there are certain institutions involved in this process like the CDSCO, ICMR, DCGI, CTRI, and what are the ethical what are the standards that are followed during the trial. So ethics committees have been formed for every institution which aims to conduct clinical trials. They should have this committee to review the trial protocols. Then, similar to these committees, boards are institutional review boards are established within the institutions to review and monitor the ethical aspects of the clinical trials. Then we have this independent ethics committee, which are the which ensure adherence to ethical standards. Then we have ICMR based guidelines also, which emphasize on informed consent, confidentiality, and protection of vulnerable population. And these rules say that in case of any trial related injuries or death, there should be mandatory compensation. Okay. So India has waived off these clinical trial conditions for only 5 categories of drugs. First are those drugs which are important for rare diseases, then gene and cellular therapy products, new drugs which are used in pandemics, special defense purposes, and for which have significant therapeutic advances. So this move is aimed to expedite the availability of advanced medicine in India for conditions like cancer, rare diseases, and autoimmune disorders. So, under Rule 101 of New Drugs Trial Rules of 2019, DCGI has the authority to grant this waiver already, and this also aligns India with global markets or the global standards. But because India has previously permitted waivers for local clinical trials, in 2012, a parliamentary standing committee expressed concerns in its report that there may be certain medicines which require local clinical trials because India has different conditions and genetic factors. Okay. So the next topic is check truncation system. This topic is important for your economy section. So for expeditious clearance of checks, RBI has recently introduced a measure of the on the continuous clearance of checks under the check truncation system. What is this CTS? Check truncation system is the process of stopping the physical flow of a check
instead of that, introducing or transmitting it electronically. So it's an online image based check clearing system where check images and magnetic ink character recognition data are captured at the collecting bank branch and transmitted electronically, so thereby eliminating the need for actual check movement. This process is protected by a comprehensive PKI based security architecture. So CTS 2010 standards contain certain benchmarks towards achieving standardization of checks issued by the banks across the country. These also include the provision of mandatory minimum security features on check forms, like the quality of paper, watermark, bank's logo in invisible ink, and these minimum security features and standardization help the banks while scrutinizing or recognizing the checks of the drawee banks in an image-based processing scenario. So, what are the benefits? Benefits include realization of proceeds of check within the same day. Data storage and retrieval becomes easy. Minimizes the risk and introduces a secure check clearing system. It also results in cost savings because there is no need for physical movement of checks anymore. It also provides shorter clearing cycles with a centralized image archival system. Okay. So the next topic is Kasturi Cotton Bharat. This topic is important for your economy section. So Ministry of Textiles has empowered cotton ginners across the country to produce the Cotton Bharat brand, which is based on the QR code certification technology. Okay, so Kasturi Cotton Bharat is an initiative of Ministry of Textiles. It is a pioneering effort in traceability, certification, and branding of Indian cotton. It provides complete traceability of Kasturi Cotton Bharat tagged bales across the supply chain. So QR based certification technology has been introduced at each stage of processing. So, at any stage of processing, one can see where this particular bale of cotton has arisen. What is the origin of the this particular bale of cotton? So, in this regard, a microsite has been developed with QR code verification and blockchain technology, and Kasturi Cotton Bharat brand is operational at the national level. So, ginners across the country have been empowered to produce this brand as per stipulated protocols. So, what is ginning? It is the most important step of the spinning process, and ginning is the process of getting the clean cotton by separating or removing the seeds, dust, or any other foreign particles, so that better cotton can be offered for the cotton spinning mills. Actually, it was done traditionally by hand, but nowadays machines are being used. So the next topic is monkeypox. This topic is important for your social issues. So World Health Organization has recently called for an emergency meeting to discuss the outbreak of monkeypox due to the recent surge in cases in Congo. So monkeypox is a viral zoonotic disease. It is part of the same family which causes the smallpox. So the first human case of monkeypox was recorded in 1970 in DR Congo. So the source of this disease remains unknown. It is found mostly in areas of Africa, but it has been seen in other regions of the world also. Common symptoms of monkeypox are skin rash or mucosal lesions, and it can be accompanied by fever, headache, muscle ache, back pain, low energy, swollen lymph nodes. So the mortality rate of monkeypox ranges from 0 to 11% in outbreaks. Human to human transmission of monkeypox occurs due to the direct contact with body fluids, and there are no specific treatments for monkeypox virus infections. But it is being said that, of course, apart from early and supportive care, even the smallpox vaccination has shown considerable uh, uh, benefits in dealing with this disease. Okay. So the next topic is Nandini Sahakar Yojana. This topic is important for your economy and your social issues topic. Minister of Cooperation informed the Rajya Sabha about the Nandini Sahakar Yojana or scheme, which is aimed to assist women cooperatives so that they can take up business model activities under the purview of National Cooperative Development Corporation. So it is a women focused framework for financial assistance, project formulation, hand holding, and capacity development. There is no limit or maximum limit on financial no minimum or maximum limit on financial assistance to projects by women cooperatives. It provides a 2% interest subvention on its interest rate on term loan portion for a new and innovative activities. So any cooperative society with 3 months in operation is eligible to apply for assistance, which will be in the form of credit linkage for infrastructure term loan. Women cooperatives are those which are registered as women cooperatives, and they have a minimum of 50% of women as primary members.
So this scheme is aimed to assist and improve the socio-economic status of women. It also supports the entrepreneurial dynamism of women through women cooperatives. It converges critical inputs of women's enterprises, business plan formulation, capacity development, credit and subsidy, and interest subvention of other schemes. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics on Monday now. Until then, goodbye and take care.